is Kibo by Trestle Labs. दिस एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये भी पीयूष ने डाला होगा पैसा। यस, पीयूष ने डाला है पैसा और बहुत सस्ते में उठाई है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी ये डीप टेक में जाएगा। कीबो बाय ट्रेसल लैब्स, देखे जरा। मैनेजिंग schools, colleges and offices digitally inclusive with solutions that help listen, translate and digitize content across 60 global languages. Very interesting. ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्यों लिखा हुआ है लेकिन इनका, ये मुझे समझ में नहीं आया। ओह, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, सो दे सी कैन और सी। उसी जो टेक्नोलॉजी। हाँ, दे कैन सी, दे कैन वर्नाकुलर भी अगर लिखा हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करके वो कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, लिसन, ट्रांसलेट, डिजिटाइज एंड ऑडियोटाइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। तो ये क्या टाइप भी कर देता है खुद ब खुद, कि आपने मान लो इंग्लिश में लिखा, उसको खुद ब खुद ही वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, मलयालम में ट्रांसलेट कर देगा। और अगर एंड वाइस वर्सा, आई थिंक वर्नाकुलर में इनका पूरा का पूरा गेम होगा फिर। ओके, if you have hard copy printed and handwritten documents and want to listen, translate, digitize और audiotize them। अंग्रेजी की किताब आपको मलयालम में पढ़ के बता सकता है सर ये। Yeah, this fits into the Bharat theme. I don't know how many of यस। you are aware, but judiciary in India has a huge struggle. A judge sitting in हम्म। Chennai cannot give a judgment in Tamil, right? हम्म। हम्म। Because of the language issue. Yeah? People working in the court system and other departments. That's just an हम्म। example I'm giving, right? India is such a diverse country. So हम्म। all the judgments from lower judiciary till Supreme Court are written in English. Even हम्म। though the person who is appealing or person who is defending may not understand in English, right? In most हम्म। cases, the language हम्म। which is written. हम्म। So these kind of use cases are interesting, and uh, I think it will be a interesting play going forward. तो Many use बहुत cases I can think बहुत of. Many many use many use cases. cases, many use cases। Yeah, yeah. I don't know how Just many a of you. sobering thought here, Sohail, just a sobering thought here. While हाँ। this is indeed a very interesting space to be in and it's sure to be big, as of now, we need to just hold on to our horses until the technology matures because in language there are four clear aspects. या। Content hai, context hai, semantics hai, grammar hai, these are all completely different. Translation currently works fine on the grammatical aspects, but it at times slips in the contextual and the semantic aspects. It will, of course, improve with time as the models improve, as the training data sets themselves improve, as the biases go down, and so on and so forth. But what's fascinating here is the OCR aspect, and it's an end-to-end solution because I have to do translations every day in three languages. हम्म। So I use a variety of tools. This is one single tool that end to end I can just have a hard copy based on what I'm seeing, and I get uh, a video output. या That is very. या। If I have to create a Marathi video from a English content for my marketing, I know the kind of steps that we have to take, even with all the tools that are available. So it's a very हम्म। promising area, but with one caveat. I don't think we are yet at that point when we can take the output as is without editing. We will need to have a strong linguistic skilled editor on the team who can verify the translated contents. With that हम्म। caveat, brilliant. Because this is क्यू my field. I mean, I practically do this practically every day. Couple of hours क्यूए every day, I do क्यूए it every day. क्यूसी क्यूए क्यूसी करना करना ज्यादा Yeah, जरूरी है yeah, यहाँ पे बिफोर yeah. टू डिप्लॉय इट प्रॉपर्ली। Because no tool so far has satisfied me in terms of contextual meaning capturing. There are a few, I would not, since this is an open forum, I will not like to name brands. There are a few हम्म। that are really good, but I haven't found any that's there yet. I may be wrong, हम्म। I'm only one person, but that's my feeling. इसमें लेकिन So, दो Bonny, तीन I think चीजें we'll have हैं। something interesting to say on this. Yeah, I think हाँ। if you see, right, the idea of Krutrim AI, right, it is हम्म। like it is something on the same lines because see what happens is that see now the thing is that with like large language models, right, the problem with large language models is that they are trained on the US data, right, and and the data of our side is very less, या right, या especially the vernacular. So I या। think the idea is with basically Servom AI, right, and Krutrim AI, which where they are either basically fine tuning with our data or basically building the large language model with our data. I think those players would do basically well in this space. The only issue what I feel is that I think
if the tech becomes easy, right, then there is no moat with them. The only moat they will have is distribution, right? Hmm. Else there will be no moat because then if the tech is also resolved, then it will be very easy for anyone else to do it, right? So that would also be a challenge. हम्म। देखो मेरा ये टेक है इसमें कि एक तो आई थिंक दे आर वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इन्होंने देखो डिजिटल इंक्लूजन बोल रहे हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी स्टैक ट्रस्टेड बाय आईटी एंड स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी घुस गए ये। ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन कंप्लायंस विद सीबीएसई सर्कुलर एंड गाइडलाइंस आल्सो एंड यूजीसी गाइडलाइंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आई थिंक दे आर गोइंग द गवर्नमेंट Possible. route। Sir. That's हाँ। possible because IIT, then I personally know of several people who have been working on this for years and years. Yeah, yeah, So this has been a major focus area, at least in the Indian linguistics scenario. yeah। So of that, there is no doubt. हम्म। तो मेरा बस ये टेक है कि जो आप बोल रहे हो ना आकाश की डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बॉटम अप और टॉप डाउन। तो ये टॉप डाउन जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं भाई मैं गवर्नमेंट के साथ ही कर Mm. रहा हूँ, गवर्नमेंट ही मेरा बेचेगा, मोदी जी मेरा नाम लेंगे एक बार और सब कुछ ले लेंगे हमारा। तो कहानी वो है। Mm. Again, एंड that I understand this. I mean, I understand completely understand it. But do you think, I mean, they would be able to make like higher margins, right? Because if you see most SaaS players, right, I mean, I'm not exactly sure if it is SaaS or not, but if you see the real SaaS players, their gross margin must be 70-80%, right? That's why, हाँ। like, that's the expectation. Would they be able to reach that expectation, right? अब देखो मेरा That would, इसमें क्या टेक है कि एक तो सास है, ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब सास का क्या है ना, इफ दे गेट इंडक्टेड इनटू द डिजिटल स्टोरी ऑफ इंडिया और सारे स्कूल्स को बोल दिया जाए कि भाई यही इस्तेमाल करो, तो उनका कैक जीरो हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली उनका पाइपलाइन में फनल में घुस गया वो स्कूल के। एंड द यूजेबिलिटी कम्स ऑटोमेटिकली। लुक एट द वॉल्यूम ना, मतलब माय पॉइंट इज if this gets standardized across all universities and all schools, the moment we get into a digitized model, then I think margins will not be a problem for you because then you'll be playing on a lot of volume. अगर आप एक एक करके हर एक कॉर्पोरेट को जाकर के पिच करते हो या फिर आप एक एक कंपनी को ऑनबोर्ड कर रहे हो, बहुत मेहनत है, आई एग्री। लेकिन 100% Yeah. that is true. तो Yeah. मेरा वो टेक है। क्या लगता है इसमें हैरी, सौरभ, व्हाट आर योर टेक्स ऑन दिस? Yeah, I do have slightly different take on this हम्म। because this is like a kind of a tech or a feature, right? हम्म। So which will anyway come. So how can, let's say, how big a business we can make around this, which would be provided for free by a lot of technology companies. That will be one of the challenges. And secondly, once you look at their valuation of 10 crores, right, they हम्म। hardly have scratched the surface. So they have हम्म। put in tons of names out here in terms of MOUs and something, but हम्म। they haven't been able to monetize it yet, which is a key issue in this kind of a scenario. हम्म। ये देखो मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की है सर इन लोगों ने, Yeah, so देख रहे I हो। tend to agree with, हम्म। yeah, I tend to agree with Saurabh also, right? हम्म। So all these logos you see, for example, I'm currently These are, working. let's say, sorry. No, you go I'm ahead. saying these are crap logos, right? Because what has happened is this is like you putting in name of 50 VCs, okay, they are part हम्म। of us, हम्म। but none of them might have done a deal with you. हम्म। So हम्म। putting in the logos is the easiest thing you can actually आई do. एग्री। Sorry, आई एग्री। Kulmani, go ahead. Yeah, so first to Suhail's point, from user acquisition perspective, this partnerships, the best way. Them. Not even CBSE schools. Let's say they become partner of something like Indian Knowledge System, right, हम्म। which is run by AICT and UNICE, right? That will give हम्म। them. And second, to Saurabh's point, also, I completely agree that this doesn't mean anything. Is it converting into revenue? Maybe हम्म। not. So let's say I'm working. I was last week. I was with a AI founder who's training his model on CBSE data. Right. हम्म। He had done MOU with CBSE, but it's not generating any revenue immediately. I don't know how will that convert into revenue. But and then CBSE may have done multiple MOUs with multiple companies in the same space.
श्योर। इनका रेवेन्यू कितना है अभी? तो सारे डोमेन एक्सपर्ट्स लग रहे हैं मुझे। हम्म, इसका रेवेन्यू कितना है? कैन वी फाइंड दैट आउट? तो ये और बोल श्योर। रहा है 2019 का डेटा है, लेकिन थोड़ा पुराना डेटा है। नेट सेल्स 40 लाख का था उस टाइम, बट 2019 इज टू ओल्ड डेटा। 5 साल पुराना डेटा है ये। हम्म, आई एम अज्यूमिंग Other थोड़ा सा तो factor बड़ा is होगा। हम्म। no, no. So there are a couple of factors. One, this is a 6-year-old company incorporated in 2017, 17। and once these guys are getting a 10 crores का valuation, वही 50 lakhs to 1 crore के बीच में revenue रहेगा. So हम्म। they have hardly scratched the surface yet. आई थिंक ये जितने इनका जो जीटीएम मुझे जो समझ में आया, ठीक है, एंड अगर आपकी इनकी जो वेबसाइट है ना, आई डोंट नो, वेट आई थिंक मैंने बंद कर दिया वो अबाउट एस। हाँ, ये है इनका। दिस इज द स्टोरी दैट दे आर सेइंग, राइट? 2017 से इन्होंने चालू किया था बनाना। आई थिंक ये जितने आप ये देख रहे हो ना लोगोज, ऑल ऑफ दीज लोगोज हैव कम हियर। सो इन्होंने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बनाया, फिर दे आर सेइंग कि विल कस्टमर्स बाय। फिर 2018 में इन्होंने कुछ कुछ एमओयू साइन किए, 12 ऑर्डर आए इनके पास 6 मंथ पायलट का। देन दे हैव ग्रोन, और 2021 में कुछ कुछ अवार्ड ववार्ड जीते हैं। अभी ये लोग मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेशनल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। दीज पीपल आर गोइंग फॉर स्केलिंग, पार्टनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा था, मैं अज्यूमिंग कि थोड़ा सा तो बेच ही रहा होगा ये। एंड And ऑल so ऑफ दीज। most बोलो। of these distribution deals don't actually convert into revenue. कन्वर्टेड, अच्छा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अभी मेरे ख्याल से ये पूरा पीआर पे ही फिर फोकस है, सो दैट एनीवेयर एवरीवेयर सर्चेस, ये सब वैलिडेशन देता है ना सर। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये सारी की सारी, व्हिच हेल्प्स देम इजी फॉर इजियर क्लोजर्स। देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। इफ एनीथिंग क्लोजेस, इट क्लोजेस।